हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ मैनेजरियल राउंड Q&A सीरीज। इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड टेक्निकल लीडरशिप के क्वेश्चंस को। वी हैव 10 क्वेश्चंस टू कवर। और बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड से कि जो मेरी पिछली 2 वीडियोस हैं इसी सीरीज में, वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस को टारगेट कर रही हैं। सो डज नॉट मैटर कि आप कौन सी प्रोफाइल से हो, स्टिल आपको वो क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल लगेंगे बिकॉज बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं और आप अपनी स्किल, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके आंसर्स को ट्विक कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो एंड यू कैन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। बट in this video we are going to target specifically front end and React.js questions. So दो ऑप्शंस हैं आपके साथ, आपके पास। पहला, आप स्किप कर सकते हो वीडियो, एंड सेकंड जिसमें आप फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर दो और फिर आंसर फ्रेम कर लो। सो द चॉइस इज ऑल योर्स, आई विल लीव दिस अप टू यू। ओके, बाकी जो लोग रुक रहे हैं, लेट्स प्रोसीड। सो जैसा मैंने बोला, इस कैटेगरी में 10 क्वेश्चंस हैं जो हम आज कवर करेंगे। एंड क्वेश्चन 1 पे जंप करने से पहले एक क्विक रिकैप कि ऐसा हो सकता है ना, आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मतलब थर्ड पार्ट पे सीधा आपने जंप किया है, तो इसलिए पहली चीज, हम 3 लाइन रिदम फॉलो करने वाले हैं, विच इज प्रॉब्लम, एक्शन एंड रिजल्ट। क्यों? क्योंकि स्टार मेथड मुझे पर्सनली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इंटरव्यूज में हम ऑलरेडी नर्वस होते हैं, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ, तो आई फील दिस इज सेम फॉर यू एज वेल। सो जब हम बेसिक चीजें ही भूल रहे हैं तो उसमें हम पहले तो क्वेश्चन को ही समझना है, इज अ टास्क फॉर अस। उसके बाद उस क्वेश्चन के बाद जो ये स्टार है ना, STAR, उसमें स्टार स्टैंड्स फॉर, सॉरी, S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, T स्टैंड्स फॉर टास्क, ऐसे कर करके इनको मैप करना इज अनदर टास्क फॉर मी। और उसके बाद इसके हिसाब से अपने आंसर को फ्रेम करना इज अनदर बिग टास्क फॉर मी। सो मैं तो फंबल कर ही देती हूँ, इसलिए मैं जो पर्सनली फॉलो कर रही हूँ, जो मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, इज दिस 3 लाइन रिदम, or you can say 3 line method, which is problem, action and result. It is far easier, trust me. ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको किन 3 चीजों की जरूरत है इस सीरीज को फॉलो करने के लिए। पहली चीज है ये प्रॉब्लम, एक्शन, रिजल्ट। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसको आप कहीं नोट कर लो, ये नोटेड होना चाहिए आपके पास। प्रॉब्लम, एक्शन, रिजल्ट। अब वीडियो देख ही रहे हो तो थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा सा एफर्ट है बस। प्रॉब्लम, एक्शन एंड रिजल्ट ये अभी कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। फर्स्ट टास्क डन। उसके बाद सेकंड, आपके पास चीट कोड टेबल होनी चाहिए। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दैट वीडियो इज कंपैरेटिवली लॉन्गर देन अदर्स। तो ये मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको चीट कोड टेबल मिलेगी, कैसे आपको आपकी प्रोजेक्ट स्टोरी मिलेगी, जो कि थर्ड जरूरी चीज है इस सीरीज को फॉलो करने के लिए। ये एक अप्रोच है जो मैं आपको दे रही हूँ। पहले आपके पास प्रॉब्लम, एक्शन, रिजल्ट का नोट होना चाहिए कहीं पे रिटन। सेकेंड, आपके पास चीट कोड टेबल होनी चाहिए। अब बाकियों के साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी कि वो कैसे लेना है। आप फर्स्ट वीडियो, इसको पॉज करके फर्स्ट वीडियो पे जाओ, जल्दी से देखो और वापस इस पे आ जाना है इन क्वेश्चंस के लिए। सेकंड एंड थर्ड, आपकी प्रोजेक्ट स्टोरी। इसके लिए 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। ओके, सो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है इसमें। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। टोटल 10 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब हाउ वी डिसाइड बिटवीन क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक जनरेशन फॉर एन ऐप। आंसर देने से पहले मैं ये बोलूंगी कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन को रीड करें, उनके आंसर्स हमें मिलते रहेंगे, तो हमें क्या करना है, धीरे बोलती हूँ, उनके आंसर्स हमको मिलते रहेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लगता है उस कॉन्सेप्ट को पिक करना है और अपनी चीट कोड वाली टेबल में डाल देना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी काम करना है उस टेबल के साथ, अब ये प्रोजेक्ट स्टोरी के साथ। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, आपको इंपॉर्टेंट लगता है, उसको चीट कोड टेबल के क्वेश्चन वाले में तो इसका क्वेश्चन, मतलब जो प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट हो रही है वो प्रॉब्लम डाल दो। कीवर्ड वाले में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लगता है वो डाल दो, और मेमोरी हुक वाले कॉलम में आपको डालना है ऐसी कोई भी लाइन जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाए, ठीक है। और प्रोजेक्ट स्टोरी में क्या करना है, जैसे जैसे आंसर पढ़ेंगे अगेन, वैसे वैसे जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, मतलब आपको लगे कि हाँ ये तो अब आ ही गया है। यस, वन मोर थिंग जो मैंने शायद नहीं बताई, वो जो वीडियोस है ना 2 अपलोडेड, उनमें से एक AI प्रॉम्प्ट वाली है,
मैंने एक एआई प्रॉम्प्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है जिसमें आपका इनपुट आपके इनपुट के अकॉर्डिंग आपकी प्रोजेक्ट स्टोरी मिल जाएगी इन केस आप अपनी प्रोफाइल स्विच कर रहे हो। उस प्रोजेक्ट स्टोरी को बिल्ड करते रहो ना। तो ये जो सीरीज इसलिए मैं बोल रही हूँ, पहली वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से आप बाकी सीरीज को फॉलो करो। तो अब जब वीडियो देख ही रहे हो तो थोड़े से एफर्ट्स डाल दो। ओके, अब आंसर्स पे चलते हैं ना। क्वेश्चन भूल गए ना। आई विल describe how you decide between client side rendering, server side rendering and static generation for an app. The problem is our app needed SEO and fast first load. Fast first load डाल सकते हो टेबल में। Action, I chose server side rendering for pages that require dynamic data and static generation for content pages. The result, this approach improved load times and search engine visibility without complicating the architecture. Memory queue, dynamic is SSR, static is SSG, which is faster plus SEO. Second question, how do you structure a large front-end code base to keep it maintainable across multiple teams? So इस question में problem हमें जैसे मैंने बोला था is given by interviewer, which is to structure a large front-end code base. Ab, the action we would take is I organize features into modules with separate folders for components, hooks, and services. I enforce naming conventions and shared utilities to avoid duplication. The result, this makes onboarding easy and reduces merge conflicts across teams. Memory queue is modules plus convention is easy onboarding plus fewer conflicts. Question 3. Explain a time you choose one state management approach over another. This is very important, very basic. Context, Redux, Zustand, RxJS. And why? So again the problem is given by the interviewer. We will jump to the action we took. For a small to mid-size app, I used Context API for global state instead of Redux to avoid boilerplate. I ensured components only re-rendered when needed using memoization, and the result, this kept app lightweight while maintaining predictable state. Memory queue is context is lightweight, memoized leads to predictable state. Question 4. How do you design components for reusability and theming across products? So action is I create components with props for variations and wrap them with a theme provider. Styles and tokens are centralized in a shared library. So the result is teams can reuse them across apps while keeping consistent look and feel. And the memory key that you can use is props plus theme provider will lead to reusability and consistency. Question 5 is walk me through a trade-off you made between developer economics and end user performance. So I initially used a large component library to speed up development. Later I noticed bundle size increased and page load slowed. So I selectively imported only needed components, balancing speed for developers and performance for users. Memory queue is big library means slow page load and selective imports means balance. Sixth question, how do you approach third-party library vetting and upgrade policies in production apps? These questions are a bit on a higher scale. So if you have your interview in Infosys and all, then most probably they won't ask you this level of questions. But when you know how to frame your answers for them, you know how to frame answers for every question. So I will repeat it. How do you approach third-party library vetting and upgrade policies in a production apps? So so the action is I check library popularity, maintenance frequency, and browser support before adoption. For upgrades, I test in staging and only merge when all tests pass. This ensures reliability and avoids breaking production features. So memory queue that you can use is check plus staging will safeguard upgrades. And this means reliable apps. Question 7. Describe a time you introduced a front-end architectural pattern like micro front-ends, module federation, design system, and what were the outcomes? So you can respond with something like this. In a large dashboard project, I introduced a modular folder structure. So if you have your project story ready with you, you know exactly at what part you were working in your project. So
In these type of questions, like whatever the answer I am sharing with you right now, you can tweak them according to your project story, and you can say, okay, I worked on say for some insurance company, and in that we were handling the contracts or emails and the data for users who have subscribed to a particular insurance policy. So for that, there was a large dashboard, and I introduced a modular folder structure and shared component library. Teams could develop independently, and CI/CD pipelines that are used in Git, GitLab, GitHub integrated their changes automatically. Development speed improved and code duplication dropped significantly. This is the result. So memory queue is modular plus shared library that we can use for teams to work independently, and this also expedite the development. Question 8. How do you design for offline support or unreliable networks in a web app? So I used service workers. This is something important that you can add in your code cheat code table, service workers. They won't ask you specifically for service workers, but if you can say this term in your answer, they will know that you have a good level of knowledge. So we can use service workers and caching strategies for critical assets and API responses. Users could still access key features offline, and errors were gracefully handled. So this improved the user experience, especially in low bandwidth scenarios. Memory queue, service workers plus cache will make the app available offline to some extent, and this also enhances the UI UX for user. What's Question 9. What's your approach to progressive enhancement when older browsers must be supported? So hold on, think for a moment. Think, what can we do if we want our older browsers to remain supported while there may be some enhancements or upgrades that we want? So generally, if I say, I would say that okay, I'll find some enhancements or upgrades that are easy and supported by older browsers. This is a very common answer, and this is what most of the people will say. But what you can change in your response is revealed in this answer, where we use feature detection and polyfills only where necessary, not every. So the core functionality works everywhere, which is the basic, the foundation, while modern browsers get enhanced features. So this ensures accessibility without breaking legacy support. Memory queue is feature detection, polyfills, and functional everywhere. Then last question, how do you ensure a component library stays in sync with app implementations? So you would say, I maintain version releases of the library and enforce usage through a CI/CD pipeline. CI/CD pipeline is important concept. They will, I would say there are 50 to 60% chances they will ask you about CI/CD pipelines. So if you have not included it still in your cheat code table, or it is not there, make sure you add it. So I maintained version releases of the library and enforce usage through a CI/CD pipeline. Apps import the library via package manager and get notified of updates. So this prevents mismatched version and ensures consistent UI. Now the memory queue is version library plus CI/CD means consistent UI across apps. So this is it for this video. And sorry for being late. It was a festive month, and I was also facing a lot of Canva issues as well where I was preparing this presentation. So I would request you all, if this video helped you even a little bit, please hit a like button and subscribe to this channel. Also, please hit a bell icon so that you'll get notified whenever I post a new content or a new video. And I'll see you in some other video. Stay tuned, and all the best for your interviews.